Praise the Lord. Amen. God helped us to sing such beautiful songs. Praise the Lord. As the word says, okay, as the word says, hallelujah, wherever two or three are gathered, God is there in between. Amen. We praise the Lord that God is there between us. God helped us to sing, Lord, how can we not sing your praises? Amen. Hallelujah. Kaise teri stuti na karu. Amen. It's not that we did not fall sick. It's not that we did not have problems. We all had various problems in our life, but God brought us victorious until this point. Psalms 84 says, blessed is the man whose strength is God. Amen. Praise the Lord. Amen. Belam ninilulla manushan bhagyavan. Amen. Praise the Lord. It's a little difficult that we have three different groups of people amongst us. People who understand Malayalam, people who understand Malayalam, Hindi, and English. So we will use three languages in between, although the main message will be in English. I pray to God that God cross all the barriers of language and talk to each one of us. As you all know, this is hosted on behalf of Bethel AG Hindi service. May I call upon our elders to bring his please. हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया कि हम सब बहनें इकट्ठे होकर मिलकर प्रभु की उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और मैं हमारे बेथिल एजी हिंदी वुमेन्स फेलोशिप के द्वारा मैं अर्चना प्रभु यीशु में आप सब बहनों को अभिवादन करती हूँ। सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस सुंदर समय परमेश्वर में के चरणों में आने के लिए आपने अपने जीवन में आपने दिया है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने दिया है। मैं हमारे बेथिल इंडी वुमेन्स फेलोशिप के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये अभी इस 10 साल पहले ये हमारा बेथिल एजी हिंदी वुमेन्स फेलोशिप शुरू हुआ है। और इस बेथिल हिंदी वुमेन्स फेलोशिप में परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है सब बहनों को। और जो हमारे एक मिशन है जो वुमेन्स फेलोशिप का बेथिल हिंदी वुमेन्स फेलोशिप का, वो है जो प्रभु का वचन है, जो उसकी आज्ञा है और जो उसका भय हमारे जीवन में हो, हमारे कलीसिया में जो हर एक जो भाई बहन है, जो बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, बुजुर्ग है, सबके जीवन में हो। और जो हमारा जो एक इसके द्वारा हम परमेश्वर को जो उसको महिमा दे, उसकी स्तुति करे हमारे कलीसिया के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। और जो विजन है हमारा कि जब परमेश्वर का जो वचन है वो बिना रुकावट हमारे जीवन में प्रवाहित होता रहे, ताकि इस वचन के द्वारा हम दूसरों के जीवन में ज्योति और नमक बनकर रह सके। और इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले और प्रभु की महिमा हम अपने जीवन के द्वारा कर सके। और हमारा जो बेथिल हिंदी वुमेन्स फेलोशिप जो है मीटिंग वो साल 2010 से शुरू हुआ है, फरवरी महीने से। और जब ये मीटिंग शुरू हुआ तो हम बहुत कम थे इस मीटिंग में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य की हर बात जो होती है छोटे रूप से उसकी शुरुआत होती है। और जो परमेश्वर का राज्य होता है एक राई के दाए के दाने के समान वो शुरू होता है। और हम जब हमारा शुरुआत भी हुआ तो एक छोटे से राई के दाने के समान था। हम सिर्फ उस फेलोशिप में जो वुमेन्स फेलोशिप थे हम थोड़े से बहनों के साथ ही उसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज 10 और 11 साल के बाद हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये बेथलेहम जी वुमेन्स फेलोशिप है, ये बहुत आशीषित हुआ है, बहुत बड़े रूप से बढ़ गया है। वो राई का दाना पेड़ बन चुका है।
और उसके द्वारा बहुत से बहनों के जीवन में फल आए हैं, आशीषित हुए हैं और उनके द्वारा भी हम जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हम अपनी जीवन में भी बहुत अच्छे से बढ़ा है। जैसा आपने कहा कि जब ये शुरुआत अपने राज्य के बारे में हुआ तो उन्होंने कहा कि अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि जहाँ 2 या 3 जन का इकट्ठा होना सिखाया परमेश्वर ने हमको, प्रभु यीशु मसीह ने। और हमारा जो कलीसिया है बेथेल इंडी वुमेन्स फेलोशिप, वो भी ऐसे ही 2 और 3 बहनों से शुरू हुआ है। और उस समय जो एक राय का दाना था, आज एक पेड़ बन के उसको फल आ रहे हैं। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारा इसका एक उद्देश्य है, कि हम हमारा उद्देश्य है कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की उसकी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हम हमारी और अगुवाई करे, और जो हमारे जीवन में उसकी अगुवाई हमें मिलती रहे। तो हम सब ये कलीसिया में, हमारे जो कलीसिया में, इसमें हमारा बाइबल स्टडी होता है, फैमिली फेलोशिप होता है, वुमेन्स फेलोशिप, प्रेयर मीटिंग्स होता है, फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होता है, और चिल्ड्रन के लिए बाइबल स्कूल भी होता है। और इस उपासना और जो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, उससे मांगते हैं कि उसके के लिए हमारी कलीसिया बढ़े, हमारा वुमेन्स फेलोशिप ग्रुप है और भी बढ़े, हमारे बच्चे इसमें बढ़ते जाए। और ताकि जो परमेश्वर की भेड़ों को झुंड में लाने के लिए हमें जो जोश चाहिए, हम जानते हैं कि वो जोश हमें सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और इसका जो एक लक्ष्य है कि इस सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह का, जो उसकी आज्ञा है वो हम माने, और उस सुसमाचार संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को तृप्त करने के लिए हमारा जीवन हम काम में लाए हैं। और हमारा जैसा फिलिप किताब की पुस्तक चौथा अध्याय और वचन 8 में लिखा है कि मसीह का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो एक उद्देश्य पूर्ति हमारे जीवन में होना चाहिए, कि एक अग्रसर होना चाहिए कि हम हमारे मसीह जीवन के द्वारा, हम हमारे आत्मिक जीवन के द्वारा हमें हमारे परमेश्वर की महिमा हो, हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो, और जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें पकड़ा है। और इस लक्ष्य के द्वारा, जैसे हम एक बहुत अच्छा एक सुंदर गीत है कि हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है। और यही हमारे लिए आज की जो एक मीटिंग है, यही प्रार्थना विनती मैं करती हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी शक्ति से हमें भरना, आपकी जो शक्ति है सामर्थ हमको देना, ताकि जो तेरी सेवा है आप हमारे जीवन में दी है, आपने हमें पकड़ा है, हमें शक्ति समझ के पूरा करें। एक गीत बोल के मैं जो उसका 2 लाइन बोल खत्म करना चाहती हूँ कि अब तक हमें जय देने वाले प्रभु की जय हो, निवासी जय हो। आगे भी कृपा से चलाना हमें, और आगे भी चलाना तेरी इच्छा से। अब तक हमें 2010 साल से अभी 2021 तक परमेश्वर ने हमें चलाया है, लेकिन अब यही प्रार्थना करके आज की मैं ये जो छोटा-सा जो एक स्पीच है वो खत्म करना चाहती हूँ कि आज तक जैसे उसकी कृपा में हमें परमेश्वर ने चला रहा, हमारे कलीसिया को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे पूरे परिवार को, वैसे ही प्रभु कि आगे भी उसी कृपा से हमें चलाए। परमेश्वर के द्वारा हम सब बहनों को आशीषित करे। और मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये आज का मीटिंग ज्वाइन किया है। परमेश्वर हम सबको इस मीटिंग के द्वारा बहुत आशीषित करे और फल देने के लिए कृपा करे। आमीन। सबको जय मसीह। Thank you, Sister Archana. Thank you so much. We have spoken a lot of Hindi church. The reason why we have spoken is not to show what we have done, but to request all of your prayers and to remind you any humble beginning. Amen. If God is pleased with it, He is the one who makes it grow. I'm truly humbled to see a lot of elders.
I cannot see all of your faces, but some of you who have switched on the videos, I want to acknowledge your support for our Hindi church, especially our Lissy auntie, Mary auntie, Vilsi mama, all of you. I'm really, really blessed to have all of you. Especially, I can also see our English service pastor's wife, Sister Lydia. Thank you for joining us, ma'am. God bless you a lot. I am also very privileged to see our speaker amongst us. We will be introducing her and welcoming her as we move forward. But before we go, I would like to I want all of you to close our eyes. We'll have a word of prayer. May I call upon Sister Seema Sandeep to please lead us in prayer. Sister Seema Sandeep. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, सुंदर इस समय के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। परमेश्वर आज का समा परमेश्वर तेरे में सौंपती हूँ परमेश्वर। हर एक परमेश्वर सुनने वालों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। दया करो पर प्रभु जी, आज हमारे जीवन में परमेश्वर जो वचन आए परमेश्वर वो बहुगुणित होने पाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। परमेश्वर सिस्टर को तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर। जो भी परमेश्वर वचन के द्वारा वो हमसे बात करे परमेश्वर, उनका परमेश्वर तू पूरी तरह से संभाल परमेश्वर। कौन सी भी परमेश्वर दिक्कत, कौन सी भी परेशानी परमेश्वर इस प्रार्थना समय में न आने पाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। परमेश्वर दया करो परमेश्वर, जो भी वचन है परमेश्वर वो सब सुनने के लिए नहीं तो परमेश्वर उसके द्वारा हम कार्य करने पाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। फिर एक बार परमेश्वर पूरे कलीसिया को, पूरे भाई बहन को तुझे तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर। दया करो परमेश्वर। परमेश्वर ये प्रार्थना तेरे प्रिय प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से की, ग्रहण और कबूल कर परमेश्वर। आमीन। Thank you, Sister Seema. Praise the Lord. Amen. The reason why we have done such a thing, I want to just say a word of it and then we will get into the more part of. I one the moment that as I'm master's wife, a lot of families come to me to pray for their marriage. In a world where a lot of propaganda is going on that women should be overpowered, women should be doing in a world where women are earning more men in service, there is a high chance that we forget what God wants us to be in a marriage, in God created institution called marriage. A lot of issues are coming up in lot of families. Divorce cases have been increasing on a ramp, on a highest rate these days. But as Christians, especially during these times when the world calls on for women to be empowered, our Bible does not teach women to go down, but at the same time, being humbled and being empowered in the presence of God. It is very important. What does the word tell to us? What does the word expects of us? What is God trying to tell to us? And in these times, it's important that we sit together sometime, call upon a sister who is anointed, and speak to us from the word of God. And that's how this meeting has coined up in our minds. And we have been praying about it, and God has led to us to a speaker, Sister Agnes Sam. I would like to now spend some time through our Sister Ashley, who will be introducing to us Sister Agnes Sam. Sister Ashley, please, over to you. Good evening, sisters. It's such a joy to see all of you present here and taking time out to be a part of this beautiful session where the Lord is going to speak. I'm sure going to speak to each one of us. I count it an immense privilege tonight to introduce our guest of honor and speaker. She is an acclaimed writer, missionary, teacher, a motivational speaker, and a family-oriented mother of 2 children. Our guest of honor and speaker tonight is a living idiom of a woman who happens to be coupled with an immense and very impressive background. Her father being an evangelist in India and a writer himself as well as a Christian journalist. Though I have not had the privilege to read some of her writings and attended sessions,
I have looked forward for today, and I've heard a lot of responses about her ministry and what she does. At the same time, I wish I could meet her face to face and personally get to know about her ministry and her family, especially to enhance my family life as well. So I'm sure each of us have been waiting a very long time and waiting anxiously to hear from her what is unfolding, and as she unfolds the role of mission life in our Christian marriage. In our special emphasis today is the Christ-centered marriage. So here I present to you, my dear sisters, as on this online platform, Sister Agnes Sam from Assam, India, to share what the Lord has in store for her, for each one of us tonight. Sister Agnes. Praise the beloved sister and sisters fellowship. Glad that Almighty is using you, Indian, for spreading the gospel and for the expansion of His kingdom. I appreciate you for all the activities of fellowship. Thank you to the team for preparing us in God's presence in a very special way. I thank our sisters Seena, Navjot, Preeti, Carol, and all other members for your faithful in serving, and really experienced the presence of the Holy Spirit. I thank Sister good introduction. Actually, I'm not worthy to hear such a good introduction. Everything is because of His grace. I humble myself in the presence of the Lord. I have Kerala, born in a missionary family. You have heard about my father and his mission. I was very active in Sunday school, youth and women's fellowship, and also put some droppers in literature. Later in 2005, God sent me to another missionary family in Assam, and my father-in-law is a pastor and his family helping him in his ministries. He have schools. God bless with two children, Persis and Richard. We live in a small village in Assam. So please remember us in your precious prayers. Today, as you all know, our topic of discussion is role of a woman in a Christ-centered marriage. The story of creation is beautifully described in the first chapters of the book of Genesis. God created everything. Genesis 1:27 says, so God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female. He created them male and female. Let's go to the time of Noah. God said to Noah to make an ark. He gave all necessary instructions. Then God added, I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. He continues, and of every living thing of all flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark. To keep them alive with you, shall male and female. Several similar examples we can see in this Bible. We can understand that we are finally separated into male and female. The woman and man, they have their own abilities, their own potentialities, their own talents, and specific purposes too. It is out of the diversity and distinctive separateness of male and female that we humans are called, not only to reflect the image and likeness of God, but we also represent God in the stewardship of His good and wonderful creation. So here, more emphasis on the fact that women has a vital role in Christ-centered marriage. I request you to turn your attention to Proverbs chapter 31, verses 10 to
31. Proverbs chapter 31, verses 10 to 31. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वे अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वन भला ही व्यवहार करती है। वे ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वे व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वे रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वे किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोह ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वे अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वे एटेरन में हाथ लगाती हैं और चरखा पकड़ती है। वे दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वे तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वे सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वे बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वे बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। Thank you, Sister Madhuri. Based on this scripture portion, I would like to divide this topic into 3 parts. Number 1, role of Christian women in family. Number 2, in her church. And number 3, in the society. So first one, role of Christian women in family. I want to read a biblical passage as a key word for this point. Proverbs 14:1. The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. The wise woman builds her house. On the other hand, on the other side, we can see the foolish woman. The foolish woman pulls it down with her hands. So who is wise? Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So here the wise woman builds her house. This home is not created with brick and mortar, but with the eternal means that come from the Holy Spirit, from the Spirit of the God. The primary role of a Christian woman or a wife is to build her family. How does she build her house? Number 1, by seeking God for herself and her family. The first thing is God first. Okay, put God first in your family. Trust Him. She must believe in God and love God. See Matthew chapter 22, verses 37 and 38. Matthew chapter 22, verses 37 and 38. उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। Yeah, Jesus said to him, you shall love the Lord
your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So this is the first and great commandment. So a Christian wife must believe and love God with all her heart, soul, mind, and strength. She must encourage her household to lead a Christ-centered life. Lead the family members to family prayer. Let's see the powerful words of John H. Grofberg. So I'd like to share one picture here. So here, the words of John H. Groberg. There is great power in loving, consistent, fervent family prayer. Don't deny your families this blessing. Don't allow the strength that comes from family prayer to slip away from you and your loved ones through neglect. A family, there is a common saying, we all are familiar with that, a family that prays together stays together. Family prayer is very powerful. हम सोचने के जैसा नहीं है. I just want to say one example. I said in the beginning that I was active in Sunday school and youth programs. And God enabled me to represent my church and my Sunday school in several competitions. I attended many camps and conferences. But one day, in my family prayer, my dad shared the word of God. I remember that fine morning that was on 1st January 1989. And in that family prayer, I accepted Jesus Christ as my personal savior. So, dear sisters, as we have seen now, don't deny the blessing of your family. कभी हमको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, ड्यूटी टाइम के साथ एडजस्ट करने के लिए मुश्किल होता है, but set a time for your family prayer and ask one of your members to lead the prayer in your absence. Okay, the next characteristic a Christian woman should strive for in her family life is virtuous. Okay, a virtuous woman is a woman of resolution who, having espoused good principles, is firm and steady to them and will not be frightened with winds and clouds from any parts of her duty. She is quite strong in her pious attitude. We have seen an important question in the Proverbs. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ആർക്ക് കിട്ടും? അവളുടെ വില മുത്തുകളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, വലുതാണ്. She is very precious. So, the virtuous woman. The next one is she should be trustworthy. That means an honest or faithful or loyal wife. The husbands trust her in her chastity. She should not morose but modest. She has all the marks of virtue in her hand.
I'm extremely sorry for some actually इधर के electricity का थोड़ा problem हो गया. So okay. So the next is she should be trustworthy. As I said, that means that means an honest or faithful or loyal wife. The husband trust in her chastity. She's not morose but modest. She has all the marks of virtue in her countenance and behavior. And the next one is she should be good to her husband. She shows her love to him not by foolish fondness, but by prudent endearments. She accommodates herself to his temper. Some men are short-tempered. It's very difficult to adjust with them. किसी किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कुछ फ्रीली बात करने ही नहीं सकता है. So उन लोगों के साथ थोड़ा एडजस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है. एक उदाहरण इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल is see clap. When we put our hands together, we can hear the noise. Okay, if we simply wave one hand, there is no noise at all. So we must adjust with them. A loving wife provides what is fit for him, both in health and sickness, and all the in his life. She should not be lazy. Okay, see, please read Proverbs 31 verses 13 to 19. Proverbs 31 verses 13 to 19. वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है. वे व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं. वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है. वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोह ले लेती है और उसमें अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है. वे अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है. वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है. रात को उसका दिया नहीं बुझता. वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है. Yeah, she manages everything well. Okay, everything, all the activities of a house, maid servants, food, preparing food, taking care of the family members, everything. She manages everything well. She's not idle. She is working hard for the prosperity of her family. And verse 19 says, her lamp does not go out by night. She's not allowing the darkness to rule her family. The parable of wise and foolish virgins that comes to my mind. We can see there the wise took oil in their vessels with their lamps. Be wise, my beloved sisters. Keep your lamps burning. Jesus said, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Jesus has given us two responsibilities. No, I just want to say it, two anointments. Be the light and the salt. ये salt and light के बारे में महिलाओं को कोई कुछ समझाने की जरूरी नहीं, क्योंकि salt and light के बारे में अच्छा से हमको जानते हैं. जितना हमको जानते हैं उतना दूसरा किसी को नहीं जानता है. ये दोनों हम ज्यादा यूज करता है. So इसका जो गुण क्या है, what इसका जो qualities क्या है, वो हमको अच्छा से जानता है. So here Jesus says you are the light of the world. You are the salt of the earth. So let's test ourselves. Are we doing the responsibility of the salt and light in our family? And then we can see that she adds to his reputation in the world. Her husband known in the gates, known to have a good wife. And then we can see that she's hospitable. And there is another verse I just want to read from Hebrews chapter 13 verse 1. Says, let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers. The Malayalam translation is very good. Sahodara pidi nilangalkate, aditi salkaram marakkaradu. Okay, so she is hospitable. She is willing to serve the people that comes to her house. Then after the baptism of Lydia and her household, they begged to the apostles to come and
stay in her house. So it's very important. So showing hospitality to others, honoring our guests, loving them, treating them well. This is very important in our life. And next is the difficult one. The wife is to be in subjection to her husband. While it is understood that the role of a Christian woman in marriage is vital, we must never forget that God has set forth a chain of command for us to follow. ये थोड़ा मुश्किल का काम है, तो हमको थोड़ा मानने के लिए, बाकी एवरीथिंग सी वर्चुअस होगा, ऑनेस्ट होगा, हॉस्पिटैलिटी हम दिखाएगा, हॉस्पिटेबल होगा, एवरीथिंग वो सब हम मानने के लिए तैयार है. But the wife is to be in subjection to her husband. Normally we'll think that we also work from dawn till dusk. सुबह से शाम तक मैं कष्ट करता है, मैं क्या क्या काम इधर करता है, मेरा घर को मैं संभालता है, बहुत सारा चीज हमको बोलने के लिए है. तो इसका क्या जरूरी है? ये पति का अधीन में रहने का क्या जरूरी है? Because this rule, God has set forth a chain of command. I just want to show another picture. See, Christ is over the man or husband, and man is over woman or wife, then children. So this does not mean that woman is inferior in any way to man, or that she is to be a slave to a man. Okay, the society in which we live, the suggestion that a woman should be in subjection to her husband is considered male dominion and a denial of women's equality. And some feminist advocates encourages us to think this principle of subjection in a different way. But dear sisters, please remember, feminism has no biblical basis and no biblical support. The principle of subjection is biblically based. Please read Ephesians chapter 5 verses 22 to 24 and Colossians chapter 3 verse 18. Ephesians chapter 5 verses 22 to 24. हे पत्नियों, अपने अपने पति को ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है. Yes, wives, submit to your own husbands as to the Lord, for husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Colossians chapter 3 verse 18. हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो. Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. So this is God's command, and the wife is to be in subjection to her husband. Okay, so जहाँ ये नहीं होता है, इधर उधर काफी समस्या होता है. हमारे पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जिंदगी अगर अच्छा से आगे की ओर लेके जाना है, तो जो बाइबल और मसीह जो व्यवस्था हमारे लिए दिया है, वो हम मानना ही है. And you must be a good companion for your husband. Okay, the role of wife, a good companion for your husband. She has the joy of life, sorrows, trials, and tribulations of life with her husband. Take care of your husband. Speak openly and honestly with your husband about your physical relationship. Don't deny the physical relationship. Okay, there is also biblical. God allowed such a relationship only in family life. And tenderness, kindness, love, and understanding must motivate the physical intimacy. Honor your husband, respect him, and appreciate him. The wise and modest behavior of a woman can create a family
a piece of heaven on earth. Through patience, perseverance, and prayer, we can lead our family members to Christ. See, Sister Ansi उनका इंट्रोडक्शन में वो बोल दिया था, काफी समस्या अभी इस दुनिया में हो रही, हमारे चारों तरफ देखने से काफी फैमिली प्रॉब्लम्स. ओके, कोई भी ये व्यवस्थाओं को जो नहीं मानता है, उनके परिवार में काफी समस्या होते रहता है. सो हम परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ आज्ञाओं को, कुछ आदेशों को दिया है मानने के लिए. वो व्यवस्था हम पालने से हम पारिवारिक जीवन, खुशी का जीवन और शांति का जीवन होगा. And now let's come to her role in church. Worship together as a family. Okay. Hebrews chapter 10 verses 24 and 26, here we can say that don't forsake the assembling of ourselves together. Okay, Hebrews chapter 10 verse 24 and 26. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं. So व्यवस्था पर हम जीना है. Okay, why we go to the church? The church history begins in the book Acts chapter 2 verse 42 says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. So we need this fellowship for our spiritual growth. What is the role of wife here? Okay, we need to go to the church, be in fellowship with the church. So what is the role of wife here? Lead your family to the church. That is the role of wife here. Lead your family to the church. So be active in the church activities. You encourage your husband and children to go to the church and try to attend all the meetings of the church. Support the mission activities of the church. Pray for your pastors and their families. Pray for the brethren. These are our responsibilities. And secondly, give tithes and offerings honestly. Let's read Leviticus chapter 27 verse 30. फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वे यहोवा का ही है, वे यहोवा के लिए पवित्र ठहरे. Yeah, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. वो हमारे लिए नहीं है, कुछ भी हो, लैंड होने से भी, फ्रूट, फल, मिट्टी, जो भी है, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So that portion is Lord's. I remember in olden days in our Kerala, there was a practice. Okay, see, पुराना समय में, जमाने में अपना खेत सब कुछ करता था. And whenever the mother takes a portion from the rice, she kept a handful of rice separately. Okay, that we called a pidiyeri. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആന്റിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പണ്ട് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എത്ര നാളാണ് നടക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ഫോം ഒക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ അമ്മച്ചിമാര് ഒരു കൈ എടുത്തിരുന്നു, പിടിയേരി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ. അതിനൊക്കെ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ അമ്മച്ചിമാരായിരുന്നു. സോ that portion is Lord's portion. So हमारे लिए उसमें कुछ अधिकार नहीं है. That we must give to the Lord. वो सब में हम encourage करना है. That is a responsibility of the wife. Okay, and let's read Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. Yeah, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap.
for with the measure you use, it will be measured to you. So, okay. So remember this in our mind. With measure we use, it will be measured to us. Okay. And another thing, in the church, when we interact with the church members and all, there is a common saying that women are more engaged in gossiping than men. Okay. कोई मुझे आप लोग कुछ okay. Women are more engaged in gossiping than men. But beloved sisters, a godly woman does not gossip, judge others, or backbite. She is not conceited or caught up worldly gains. Okay. See, जब भी हमको एक मौका मिलता है, see, we will what? In Malayalam that we called pushu pushuga. Okay. So we are telling something against others. We are pointing others. Okay. She is going in that way. That is not good. Okay. Many backsliders are there in our church. You don't blame them or their families. Instead, kneel down and pray for their deliverance. उनका छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करना. It's our responsibility. If possible, go and interact with them and bring them back to the fellowship. If we are not doing this, we cannot say that we are the followers of Christ who left the 99 in wilderness and went in search of the one sheep who went astray. So don't go for gossiping and others. Instead, you pray for them. Okay, you you ask other sisters, and together you pray for the deliverance of that family or that sister. So let's do that mission instead of gossiping or blaming them. Now, the third part, the role of Christian woman in society. I just want to give you an exercise to you all. Okay, how many of you are here? Are you sleeping? Okay, can you say, what is this image? Can you identify this image? Can you say, what is this? आपको अब अगर ये पहचान लिया है तो कोई भी अनम्यूट करके आपको बोल सकता है. Can you say, what is this? What image is this? Hope you have seen the image. आप सब लोग इधर है क्या थोड़ा जानने के लिए? Okay. Yeah. एक ट्री है जिसके ऊपर फ्रूट्स लगा है. अच्छा. फ्रूट आया है वो ट्री के ऊपर. अच्छा, एक छोटा एक ट्री है उसमें फ्रूट लगाया है. Okay, good. This is what we called bonsai. Okay, bonsai is a Japanese plant art of growing ornamental or artificially dwarfed varieties of trees and shrubs in pots. Okay, by using some techniques, they dwarf this plant in a pot. ठीक है, देखने में सुंदर लगता है. एक छोटा एक मैंगो ट्री होगा, पीपल ट्री, बड़ा बड़ा पेड़ों को एक पोट का अंदर में छोटा करके रखता है. Bonsai. Okay. The situation of the woman, the Christian woman in our society is similar to this. जब परमेश्वर ने एक ट्री को बनाता है तो परमेश्वर उसके लिए कुछ उत्तरदायी रखे, एक स्पेशल विशेष उद्देश्य उसके लिए है. फल लाना है, फूल लाना है, फूल देना है और शैडो देना है, चिड़िया के लिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए एक शेल्टर होना है. But in this picture we can see this plant, it has leaves, fruits and all, but just a tabletop attraction. Okay. ऐसे एक अवस्था है आजकल का. देखने में सुंदर है, देखने में क्या है, पत्ता है, फल है, पर कुछ काम का नहीं है. Good for nothing people. Okay. सब कुछ ठीक है, देखने में everything is okay, no problem at all. They're happy in family life, they're showing, okay, they're happy, everything is okay. But literally क्या होता है, एक bonsai की नहीं है, ये bonsai जैसा है. But see, but
परमेश्वर हमसे वो नहीं चाहता है. God has given us certain responsibilities in this society that we must do. See, the African people cannot forget Mary's lesson. The people of China still remember Mrs. Betty Stam. The lives of Perpetua and Felicitas still convey a great message to the society. And Mrs. Gladys Staines, wife of Graham Stuart Staines, she taught a very good lesson of forgiveness to the whole world. So we have certain roles to play in our society as a Christian woman or a Christian wife. The inhabitants of Joppa cannot forget Tabitha. That's because of her good works and charitable deeds. Let's read Proverbs chapter 3, verse 27. जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना. Okay, chapter 3, verse 27. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in the power of your hand to do so. जब हमको भलाई करने के लिए एक मौका मिलता है, that we must do that. Mahatma Gandhi once said, be the change you want to see in this world. Okay, be the change you want to see in this world. What change you want to see in this world? Yes. As a true follower of Christ, we have several roles in this. Okay, so let me revise the things what we have discussed today. Okay, so we read the passage, this scripture portion from Proverbs chapter, the last chapter of the Proverbs. Okay, Proverbs chapter 31, and there we can see that the role of a Christian woman in family. I divided this into three. First, the role of a Christian woman in her family, then in the church, and then in this world. We learned that the wise woman built her house. Then, how can a woman build house? How does she build her house? We learned that by seeking God for herself and her family. Then we discussed that the power of prayer, and we discussed the characteristics of a Christian woman. Number one, she virtuous. Okay, virtuous woman. Then she should be trustworthy. Then she should be good to her husband. Then we discussed she should not be lazy. She should be she is hospitable. She adds to his reputation in the world, and the wife is to be in subjection to her husband, and you must be a good companion for your husband. All these things learned as the role of woman in the family. And in the church, we learned that worshiping together as a family, the importance of worshiping together as a family. Okay, and the participation in all the church activities, the activities of the church, and giving tithes and offerings honestly. Then praying for the other people, okay, shouldering the burden of others, and praying for the backsliders of the church, going and interacting with them and trying to bring them back to the church, to the fellowship. Then we learned the role of, we discussed the role of Christian women in the society. We should not be like a bonsai. We have a lot of roles to play in the society. Okay, let's remember the works of Tabitha. A lot of missionary women we can see in the history of the church. In the Christian history, we can see a lot of people. So we must follow those steps. We must remember the responsibilities. As a reminder, give us two great responsibilities: the light and the salt of the earth. We lack vision in this area, and people so separate.
A woman humbly about serve in her various capacities within the realm God has prescribed is indeed a worthy woman. And before concluding my message, let me remind you one thing. Let's go to the life of Mary, mother of Jesus. We know that she was leading a very normal, peaceful maiden life. Okay, she was very happy. कुछ उनका शादी का कुछ व्यवस्था करके रखा है, उसके लिए तैयार में बैठी थी. The angel of the Lord, Gabriel, appeared before Mary and said, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." She was troubled and she wondered what manner of greeting this is. ये किस प्रकार का एक अभिवादन है. Okay, मलयालम में बहुत अच्छा से दिया है, कृबल विचवले. Okay, कई प्रकार का अभिवादन सुना है और ऐसे एक पहले बार सुन रहे. Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Then the angel said to Mary, "Do not be afraid, for you have found a favor." And the angel announced Christ's birth to Mary. And they had a very small talk. At the end, Mary said, okay, she heard everything. Angel explained all these things to Mary. And at the end, she said, "Behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word." ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, അവിടുത്തെ ഹിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. Okay. So she got a very big commission, a very big responsibility. Okay. For the first time in her life, she heard a greeting, such a greeting in her life. And she dedicated herself for the fulfillment of that commission. Whenever you, dear sisters, whenever you hear a special call or a special greeting from God, and you dedicated your life for the fulfillment of that call, dear sisters, does start a battle in your life. जो भी है, एक नया निर्णय हम लेता है. Okay, शायद एक प्रचार सुनने के बाद, भाषण सुनने के बाद होगा, अच्छा से जिएगा, अच्छा एक डिसीजन हम लेता है, आज से मैं दूसरे को से सुसमाचार बोलेगा, मेरा पारिवारिक जिंदगी और थोड़ा अच्छा से करेगा. Whenever we take a decision, ठीक है, हम एक अच्छा डिसीजन जब भी हम लेता है, साथ साथ एक लड़ाई भी हमारे जीवन में शुरू होता है. ओके, जनरेशन मेरी को अच्छा पाया, मीन्स एक भाग्यवती होके कहा, पर उसके लिए कितना वो सहना पड़ा. I humbly remind you that it's easy to go with the tide, but going against the tide and standing for one's faith in the midst of the hostility and losing everything for that is not easy. ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായിട്ട് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഒഴുക്കിന് എതിരായിട്ട് നീന്തുക അത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. It's not easy to swim against the tide, stand against the tide. So that is Christian life. Okay, we cannot go the flow of this worldly passions. So we must stand against that. So that is the responsibility of a Christian woman in the family, in the church, and in the society. Let your light so shine before men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. We are getting a lot of opportunities, but we must utilize it well for the glory of the Lord, for the expansion of God's kingdom, to gain souls for God's kingdom. So my sincere thanks to all my beloved sisters, especially to Sister Madhuri for reading the Bible verses and Miss Carol for displaying the verses. Once again, I thank Sister Nancy and Bethlehem Women's Fellowship for this wonderful opportunity. And God bless you in the coming days and utilize more for the expansion of His kingdom in your place.
Once again, my heartfelt thanks to all those who have joined in this meeting. Some of my friends and my relatives are also joined here. I thank for them. He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. I give all glory and honor to Almighty God. Thank you and God bless you. Thank you, Sister Agnes, for bringing us such a powerful word. Amen. Praise the Lord. Thank you for telling us that it's very important to go against the flow. When the world is trying to teach us that we need to be empowered, we need to be on our own, there is a Bible that teaches us that we need to be in subjection, especially in the institution of marriage. Praise the Lord. I mean, as you've said, when we take a decision to live for God, when we take a decision to live according to the word, the fight becomes more fierce. Amen. The enemy becomes more fierce. But as you just reminded us, the one who begun the good work is faithful enough to finish it until the day he returns. Praise the Lord. I mean, it's time for us to hear a few words of thanks. May I call upon Sister Sonali to please give us to the word of thanks. Sister Sonali. Praise the Lord all. On behalf of Women's Fellowship, it's my privilege to convey the vote of thanks on this special meeting. So let's begin with the Bible verse, Ephesians 5 verse 20. Giving thanks always for everything to God, the Father, in the name of our Lord in Jesus Christ. Our Heavenly Father, we thank you for today. Thank you for giving us the opportunity to gather and study your word to help us on our role as women in the Christ-centered marriage. Although we could not meet in the personal due to the pandemic, but thank you, Lord, that your work will continue. We would like to thank you, our speaker today, Sister Agnes Sam, for bringing us God's word with the great insight. We pray that the seeds sown today into our heart and yields much fruit. We also pray that the God would continue to use mightily in advancing his kingdom and bless many others like us. I would like to thank our senior pastor, PM George, and Sister Jessie for their love, support, and guidance. Thank you to our Pastor Anish and all elders and church committees for your support and prayer. Special thanks to our English and Tamil church for your support and prayers. We also remember Sister Wilzy and KE for their support in this event. Thank you to everyone who made your time to be a part of this special meeting. May you to be a great blessings to your family. Special thanks to Sister Ansi for motivating us, worshiping team for leading us in the praise and worship, and all Bach's Women Fellowship team. Ephesians 5, verse 22 to 24, writes, "Submit to your own husband and to the Lord." Amen. Thank you, our Lord, for giving us the blessings to be called woman, and may he continue to help us to understand the great privilege he has given. God alone be glorified. Thank you, one and all. Thank you so much, Sister Sonali. God bless you. And before we wind up for prayer and benediction, it's time for once again to commit ourselves into God's hand, especially our families. There's a beautiful Malayalam song which says, "इत्रतोलम एन्ने कोंडुवरुवान ज्ञानम एन्ने कुडुम्बम एंदुल्लु यहाँ तक लेके आने के लिए परमेश्वर मैं और मेरा परिवार क्या है। आपकी दया है परमेश्वर, हालेलुया, आपकी महाकरुणा है, आपकी प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उनके पवित्र हाथों में खुद को सौंपेंगे। ये गाना जब हम लोग गाते हैं, when we are singing this song, let us give up completely into God's hands those areas which nobody in this world knows, but you and your God knows, which you conveyed in your prayer rooms. Give those situations into God's hands. Amen. Let the word be revealed in those areas. Amen. When we commit ourselves into God's hands, especially at this moment, let us give ourselves into God's hands. May I call upon our back choir to lead us in one song, in final song.
Praise the Lord. Thank you, choir. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. I also want to take a moment to thank every sister who joined us today. Amen. And I give everyone into God's precious hands. And I pray that every word that we have heard today from Sister Agnes, in the power of God's Spirit, may we use it in our life. And may the Almighty God help us through. Amen. Praise the Lord. Amen. As we have heard, God did not call us to be a bonsai plant, but indeed God has got great purpose for all of us. Amen. I have heard a lot of sisters who come and tell to me, Sister, I cannot do anything. मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोगों ने कितनी बातें सुना। आमीन। एक सिस्टर को क्या क्या कर सकती है अपने परिवार में, अपने समाज में, इस पृथ्वी में। हालेलुया, जो वचन हमने सुना, आमीन, उसको अपना के हम लोग आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। Being empowered in the presence of God is truly a great privilege. I really pray and bless every sister who had been a part of the meeting today. And today, it's time for us to do the final prayer and benediction. I would like to call upon Sister Lissy Alex. I take great respect and privilege in knowing Sister Lissy. She has been a great support personally and to our Hindi church. I call upon Sister Lissy Alex to please lead us in prayer and for the final prayer and benediction. Sister Lissy Alex. Praise the Lord. Let us close our eyes. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിന്റെ മക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പാതവിടെ കടന്നു വരുവാൻ, അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് പവർഫുൾ മെസ്സേജ് you have delivered to Miss Agnes Sam. Lord, we pray for her, bless her and be with her, Lord. Lord, especially we pray for her family and the ministry. Be with her and bless her, Lord. Fill her with the Holy Spirit and to be a blessing for all the nations, Master. Lord, as we heard, let us all love our God with all our heart, all our soul and mind. Lord, help us to continue our family prayer. Help us to be a virtuous and trustworthy woman in our life, Master. Lord, help us to fulfill and build our family. Lord, we pray for our family. Let us continue and be a model in our family. Lord, help and bless all our family and children. Lord, especially help us to be a role in our church. Help us to continue our role and worship you as a family, Master. We praise you, Master. Help our children, help our husbands, help all the sisters to worship you in truth and spirit, Master. Help us to pray according to thy word, Master. Lord, as we heard, not by looking, not as us like a bonsai tree. Help us to be for what purpose God has made us, for God, what purpose God wish to be us in our life, Master. Help us to be useful for the society, helpful for the useful for our nation, Master. Karthave, ninde kruba, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി, ഒരു ദൈവ കൃപ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഇന്ന് രാത്രി നീ പകരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Help us to, Lord, help us to be useful for your ministry, Master. We love you, Master. Lord, we pray. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വചനം കേട്ട ഓരോരുത്തരെയും നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം. ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവേ, പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ഹിന്ദി സർവീസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലേഡിക സിസ്റ്റർ ആൻസിനിഷനായി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ ദൈവം നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ, അഭിഷേകം ദൈവം നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. ആ ഹിന്ദി സർവീസിന്റെ ലേഡീസ് വിങ്ങിനായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ദൈവം അവരെ നടത്തി, ദൈവം അവരെ പരിപാലിച്ചു. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി കൊണ്ട് കർത്താവെ അവരെ പിന്നെയും ജയത്തോടെ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ സകല നന്മകളാലും അനുഗ്രഹത്താലും ദൈവം നിറച്ച് അതിനെ ശക്തീകരിക്കണം. കർത്താവെ, ഇന്ന് രാത്രി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തികളായി, കുടുംബങ്ങളായി, കർത്താവെ സഭയായി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നിറച്ചാട്ടെ. പ്രത്യേക സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ് സാമിനെയും കുടുംബത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, നിന്റെ വരവേറ്റു അടുത്തിരിക്കാൻ, നിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിന് പിതാവേ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സമ്മതവും കാവലും നാം ഓരോരുത്തരോടും, നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങളോടും, പ്രത്യേക തന്റെ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വരണം. താങ്ക് യു.
Thank you, Liz Mame. Thank you so much. Once again, thank you to Sister Agnes. Thank you so much for coming between us with the power of the word. May God bless you. We promise you that we will remember you in our prayers. Do continue to pray for us. Thank you once again to all of you. വളരെ നന്ദി. വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. God bless you all. Good evening. Thank you. Shalom. Thank you, and God bless you. Bye.